Hello everyone. In this session, we are going to discuss about cloud computing. The topics which we will be covering here are what is a cloud computing, characteristics of cloud computing, real-world applications, benefits and challenges of cloud computing. Firstly, what is a cloud? The term cloud refers to network or internet. In other words, you can say that cloud is something which is present at remote location. क्लाउड हमें पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करता है दैट इज वैन लैन और वीपीएन applications such as email, web conferencing, CRM execute on cloud. We have seen what is cloud. Let's see what is cloud computing. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को रिमोटली मैनिपुलेट कॉन्फ़िगर एंड एक्सेस करने को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है. इट ऑफर्स ऑनलाइन स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन. Characteristics of cloud computing. First of all, it provides on-demand self-services. Cloud computing में किसी human administrator की requirement नहीं होती. Users themselves are able to provision, monitor, and manage computing resources as needed. Broad network access. Cloud computing services generally standard networks and heterogeneous devices पर provide की जाती हैं. Rapid elasticity. कंप्यूटिंग सर्विसेज आर सच दैट कि जब भी किसी यूजर को उसकी रिक्वायरमेंट होती है ही और शी कैन यूज इट एंड एज सुन एज रिक्वायरमेंट ओवर होती है दे कैन बी स्केल्ड आउट. रिसोर्स पुलिंग. IT resources such as networks, servers, storage, applications and services are present on shared basis between various applications and occupants. Measured services. जो भी रिसोर्स यूटिलाइजेशन होती है बाय ईच एप्लीकेशन एंड इक्विपमेंट उसको ट्रैक किया जाता है फॉर बोथ यूजर एंड रिसोर्स प्रोवाइडर विद एन अकाउंट. दिस इज डन फॉर वेरियस रीजंस लाइक मॉनिटरिंग, बिलिंग एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. क्लाउड कंप्यूटिंग की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन डेटा स्टोरेज. Cloud computing so we can store data like files, images, audios and videos on cloud storage. Now organization need not to worry about physical storage system because physical storage system की cost भी काफ़ी high होती है. Backup and recovery. Cloud computing हमें services provide करता है for backup and recovery. So it provides a security to our data and in case our data is lost by any means, so it can be retrieved. बिग डेटा एनालिसिस. वी नो दैट कि बिग डेटा इज सो ह्यूज कि उसको ट्रेडिशनल डेटा सिस्टम से अगर स्टोर करने लगे तो दैट विल बी इम्पॉसिबल. नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग हैज रिजॉल्व्ड दिस इशू बाय अलाउइंग क्लाउड स्टोरेज टू स्टोर द डेटा. बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिस्टोर डेटा. जब भी हमारा डेटा क्लाउड पर स्टोर होता है देन इट्स इजी टू बैकअप एंड रिस्टोर इट. Improved collaboration. Cloud applications से collaboration काफ़ी improve हुआ है because it allows group of people to quickly and easily share information on the cloud via shared storage. Excellent accessibility. Cloud allows us to quickly and easily access data. इसकी help से हम information को कहीं भी कैसे भी store कर सकते हैं by using only an internet connection. An internet cloud infrastructure increases organization productivity and efficiency by ensuring that our data is always accessible. Low maintenance cost. Cloud computing ने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट को काफी रिड्यूस किया है. Mobility. Cloud computing allows us to easily access all data. Services in the pay per use model. Cloud computing APIs provide करता है to users to access services and services के charges are as per the uses of service. Unlimited storage capacity. Cloud हमें unlimited storage capacity provide करता है to store our important data such as documents, images, audio and video at one place. Data security. Data security is one of the biggest advantages of cloud computing. ये हमें काफ़ी फीचर्स प्रोवाइड करता है टू सिक्योर आवर डेटा एंड इट इंश्योर्स दैट डेटा इज सिक्योरली स्टोर्ड एंड हैंडल्ड. Challenges of cloud computing are portability, computing performance,
reliability and availability, security and privacy, and interoperability. Now let us discuss them one by one. Security and privacy. It is one of the biggest challenges of cloud computing. It can be overcome by employing encryption, security hardware, and security applications. Portability. Portability means that we can migrate applications from one cloud provider to another one. But for this, there must not be under vendor lock-in. But it is not yet possible because जो भी cloud provider होते हैं, they use standard languages for their platform. Interoperability, that means application on one platform should be able to incorporate services from other platforms, and it can be made possible by using web services, but web services को develop करना is very complex. Computing performance. Cloud computing पे जो data intensive applications होती हैं, they require higher bandwidth, and that means higher cost. Reliability and availability. It is necessary for cloud systems to be reliable and robust because most of the businesses are now becoming dependent on services provided by third party. That was all on a brief introduction of what is cloud and cloud computing. Please stay connected for more updates.